Hello friends, welcome to my Japanese language class. This course for the JLPT N4 student. ये जो class है JLPT N4 student के लिए है. Today we will learn lesson 50. आज हम lesson 50 पढ़ेंगे. In this lesson we will learn Kenjo go, humble expression, go or go shimasu, special humble expression, verbs and some kanji. इस लेसन में हमने केंजो गो पढ़ेंगे और गो शिमास कुछ सेंटेंस पैटर्न इस हम्बल एक्सप्रेशन को लेकर और स्पेशल हम्बल एक्सप्रेशन वर्ब्स जो है वो भी पढ़ेंगे और कुछ कांजी पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओ वर्ब ग्रुप 1 ग्रुप 2 मास फॉर्म शिमास. इसका मतलब है मीनिंग इज ग्रुप वर्ब का कौन सी ग्रुप इसमें आएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वर्ब आएगी और मास के जगह में शिमास आएगी. इट मीन्स इन दिस पैटर्न ऑफ सेंटेंस वर्ब 1 ग्रुप 1 and group 2 will comes and instead of mass we use shimas. This form is not applicable to verbs which consist the one mora, for example mimas, imas, etc. Means this grammar or this form of sentence we cannot make with this type of verbs which have one mora, single mora, like here me single mora, is single mora. Okay, इसका मतलब है ये जो ग्रामर पैटर्न है, ये जो सेंटेंस पैटर्न है, जो सिंगल मोरा वर्ब है वहां पे हम यूज नहीं कर सकते. अगर वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आए तब भी नहीं कर सकते. ओके, इसमें सिर्फ मास को शिमास में कन्वर्ट करना है और वर्ब की पहले से ओ लगाना है. ठीक है, कोहियो ओइरे शिमास. लुक एट हियर, ओ instead of mas it is shimas. Iremas, the verb is iremas and in pattern of the sentence it will become o ire shimas. ठीक है, हमको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वर्ब में पहले ओ लगाना है और बाद में मास को हटाकर शिमास लगाना है. बस उतना ही करना है और कुछ नहीं. In this pattern what we need to do, in beginning of the verb we just put o and in end instead of mass we just write shimas. Okay, कोहियो ओइरे शिमास. एकीमध्ये कुरुमध्ये ओ ओकुरी शिमास. I will escort you to the station by car. मैं कार में आपको स्टेशन तक छोड़ दूंगी. ठीक है, यहाँ पे देखो ओ ओकुरिमास, वर्ब इज ओकुरिमास. यहाँ पे ओकुरिमास से पहले ओ और मास को हटाकर शिमास और कुछ नहीं. ठीक है, दिस कांजी रीडिंग इज कुरुमा. ताकुशी ओ ओयोबी शिमास. आई विल कॉल ए टैक्सी. मैं एक टैक्सी बुला लूं. योबीमास एक्चुअली वर्ब इज योबीमास. योबीमास के पहले ओ and instead of mass it is shimas. Okay, onimochu omoso desu ne omochi shimasou ka. Nimochu polite form is o. Okay, so onimochu is a polite expression. Omoso desu ne omochi shimasou ka. Your luggage looks heavy, shall I carry it? आपका जो लगेज है हेवी दिख रहा है, मैं कैरी कर दूं क्या? ऐसे. आज तक अभी तक जितने भी हम सेंटेंस पढ़े हम्बल एक्सप्रेशन क्या है? इन जापानीज लैंग्वेज पोलाइट फॉर्म इज टू टाइप्स. वन इज रेस्पेक्टेड फॉर्म, अनदर इज हम्बल एक्सप्रेशन फॉर्म. रेस्पेक्टेड फॉर्म रेफर्स टू द लिसनर and humble expression respect to the speaker.
or speaker nearby people, related people. Unlistener, unlistener related people. Okay, that is respectful. It is humble verb. Humble expression हम जब बोलते हैं इसका मतलब वो काम हम करेंगे. ये जो ओमोची शिमासो का it means I will carry your bag. Okay, हम करेंगे. हम थोड़ा सा खुद को नीचा करेंगे so that other person will also respect it. Okay, in Japanese language when we follow the polite expression, that there are two ways. One is respected verb, another is humble expression verb. Okay, so this is humble expression, and here doer is speaker person, related person, not listener. Another go verb, third group verb में already शिमास है, नहीं, बेनक्यो शिमास, काइमोनो शिमास, नो, सेंटाको शिमास. यहाँ पे कुछ शिमास ऐड करने की जरूरत नहीं. सो यहाँ पे सिर्फ गो लगाना है. इन दिस पैटर्न ऑफ सेंटेंस वी नीड टू पुट गो बिफोर द थर्ड ग्रुप वर्ब. ओके, रीड द सेंटेंस. काइगी नो योतेयो गोसेचुबी शिमास. आई विल एक्सप्लेन द शेड्यूल ऑफ द मीटिंग. Got it? Go verb is sechumesimas. We just put go sechumesimas. There is no exception. There is no another rules over here. Like in group 1, group 2, single mora verb cannot use, but this type of things not in the group 3 verb. When you use humble expression, it means the work done by the speaker. जब तुम humble expression use करते, इसका मतलब है जो बोलता है वही काम करेगा, या इसके इनर पीपल जो है, इनर हाउस पीपल, वो काम करेंगे. ठीक है. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो द डोयर, हु विल बी द डोयर इन द सेंटेंस, सो दैट यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रॉपर्ली. आपका अगर आपको डोयर का पता चलता है कि एक काम कौन करेगा, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पता चले जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, वाताशी गा क्योतो ओ गो अन्नाई शिमासु. Let me show you around Kyoto. Annai-shimasu is the verb. Go annai-shimasu. तो यहाँ पे कौन दिखाएगा क्योतो को, घुमाएगा? मी, वाताशी, I. Okay. साइशो ni Matsumoto sensei o gosoukai shimasu. Let me first introduce teacher Matsumoto. Saisho at first. Shokai is the verb. Shokai shimasu. Shokai shimasu is the verb. Gosoukai shimasu. Put go to make it humble expression. Then who will do it? I will do it. Doer is me, I. कौन करेगा? मैं करूंगी. So doer कौन है? मैं हूं. Me. ठीक है. पाती ni gosoutai shimasu. Shotai shimasu is the verb. Go, put go, it became humble expression. It became polite. I would like to invite you to the party. So party को कौन बुलाएगा? मैं बुलाऊंगी. ठीक है. Speaker. So put go before the third group verb. It became the polite verb. It became the humble expression. Okay. In humble expression, doer is speaker, watashi. Like respected form, we have special verbs. Here also in same way, special humble verbs. Okay, respected form में जैसे हमको special verb कुछ था यूज करने के लिए, इस तरह humble verbs में कुछ special verbs. ठीक है. चलो पढ़ते हैं. इकिमास, माइरिमास, किमास, माइरिमास, इमास, ओरिमास, ताबेमास, नोमिमास, इतादाकिमास, मोराइमास, इतादाकिमास, शितेइमास, जोनजिते ओरिमास, मिमास, हाइकेनशिमास, शिमास, इताशिमास, किकिमास and उचिए इकिमास. Go to someone's house. किसी का घर जाना है. उकागाइमास, इमास, मोशिमास, शिरिमासेन, जोनजिमासेन, आइमास, ओमनी, खाखारिमास. अभी हम ये जो स्पेशल हम्बल वर्ब्स पढ़े इसको यूज करेंगे. चलो पढ़ते हैं.
Let's start. Sato-san wa irashaimasu ka? Ima dekakete orimasu. Is Mr. Sato available? He is out right now. अभी चले गए हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो. Look at here. Irashaimasu. It is the respected form. Sonkeiko. Dekakete orimasu. It is humble expression. Kenjogo. Okay. This is respected form because here speaker, A-san is speaker and B-san is listener. But when B-san saying ima dekakete orimasu, it means that time B-san is speaker. So it is using humble expression. Okay. So what we get it? Respective forms using for the listener and humble expression using for the speaker. Is that clear? If verb is respected form or sonkeigo, it means listener is the doer and listener need to reply. If the verb is humble expression or kenjogo, then speaker is the doer. Is that clear? Dono kurai nihongo wo benkyou nasaimashita ka? 2年ぐらい勉強いたしました。How long have you studied Japanese? I studied about 2 years. 勉強なさいましたか？勉強します。します。Sonkeigo or respected form is なさいます。And します。Kenjogo or humble expression is いたします。Okay? So it is past form sentence. どのくらい日本語を勉強なさいましたか? How long have you studied Japanese? आप कितने साल जापानीज पढ़े हैं? 2年ぐらい勉強いたしました。I studied about 2 years. मैंने 2 साल पढ़ी. ठीक है. यहाँ पे देखो, वो रेस्पेक्टिव फॉर्म है क्योंकि ए सन स्पीकर एंड दिस इज फॉर द बी. बट बी जब बोलती है मैं पढ़ी हूँ और बी जब बोल रहे हैं कि मैं पढ़ी हूँ, when B is speaking that I am learning, I studied, so B is using humble expression. Is that clear? 日本の首相の名前をご存知ですか? はい、存じております。Do you know the name of the Japanese Prime Minister? Yes, I know. यहाँ पे देखो, ご存知ですか is the polite form of 知っています。知っていますか? ご存知ですか? Okay. 知っていますか? respective form or you can say 尊敬語 is ご存知です。知っていますか? humble expression or 謙譲語 is 存じております。Okay. So when A is asking to the B, A using respective form, but when B answering, B using humble expression. It means when we asking to the other, maybe listener or maybe second person, we use respective form. When we answering, we use humble expression. जब हम किसी को पूछते हैं तो रेस्पेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं. अगर हम किसी का आंसर देते, किसी को आंसर देते, हम हम्बल एक्सप्रेशन करते हैं, हम्बल एक्सप्रेशन यूज करते हैं क्योंकि रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन इसी के लिसनर के लिए होता है. जैसे यहाँ पे ए सन बी सन को पूछ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे बी सन खुद के लिए बोल रहे, आंसर दे रहे खुद के लिए. हाँ मैं जानती हूँ. यहाँ पे the person who knows who? me, I. मैं जानती हूँ. यहाँ पे बी सन जानते, खुद के लिए वो यूज है. So humble expression है. よろしいでしょうか? is a polite form of いいですか? このパンフレットをいただいてもよろしいでしょうか? May I have this pamphlet? मैं pamphlet को लूँ क्या? ऐसे. いいですか? polite form is よろしいでしょうか? ございます is polite form of あります. जैसे हम बोलते हैं あります, फोनがあります, 電話があります, 机があります. Instead of あります, if we say in polite way, we need to use ございます.
अगर हम आरिमास के जगह में पोलाइट में बोलना चाहते हैं तो गोजाइमास बोलेंगे, ठीक है, यूज करेंगे, बोलेंगे। देनवावा दोकोनी गोजाइमास का, हम पहले क्या बोलते थे? देनवावा दोकोनी आरिमास का, देनवावा दोकोनी आरिमास का ऐसे बोलते थे। इंस्टेड ऑफ आरिमास वी कैन यूज गोजाइमास। देनवावा दोकोनी गोजाइमास का, वेयर इज द टेलीफोन? If you used arimasu in polite way, you need to use gozaimasu. Gozaimasu is polite form of arimasu. Okay. The gozaimasu is the polite form of des. हम पहले बोलते थे des. des की जगह में हम de gozaimasu बोल सकते हैं, वो polite form। जैसे हाय, आई एम से de gozaimasu। एक अब यहाँ कहाँ से बोलते? जैसे रिसेप्शन रिसीव करते किसी कंपनी में, कंपनी का नेम बोलते देन दे गोजाइमास। हाय एबीसी दे गोजाइमास। ओके, लाइक दिस कंपनी नेम। सातो तो मोशिमास का किमुरा-सान वा इरासाइमास का। हेलो, दिस इज आईएमसी। सातो स्पीकिंग, इज मिस्टर किमुरा अवेलेबल? मैं सातो बोल रही हूँ, किमुरा-सान है क्या, मिस्टर किमुरा है क्या, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो देश का पोलाइट फॉर्म है दे गोजाइमास। हम देश में जाकर में दे गोजाइमास यूज कर सकते हैं। लेट्स लर्न सम कांजी। मीनिंग ऑफ दिस कांजी रिफ्लेक्ट कुन्योमी उचुरु उचुसु ओन्योमी एइगा मूवी। मीनिंग ऑफ दिस कांजी पिक्चर कांजी स्ट्रोक में यूज होता है ए कांजी। देयर इज नो कुन्योमी, ओन्योमी इज गा और काकु, गामेन स्क्रीन। Okay. Meaning of this kanji copy or project. Kunyomi uchuru uchusu. Onyomi sha. Shashin, a photograph. Meaning of this kanji true, genuine, just, exact. Kunyomi ma or ma. Onyomi scenery, true. Meaning of this kanji sound. Kunyomi otto, onyomi on, hachu on, pronunciation. Meaning of this kanji amuse, pleasant, music. Kunyomi tanoshi, tanoshimu. Onyomi gaku, raku, on gaku, music. This lesson is this much. In this lesson we learn humble expression kenjogo and special verbs related to kenjogo and uses and sentence pattern in the kenjogo and where we need to use it. हम इस लेसन में kenjogo पढ़े, humble expression के बारे में, और इसका सेंटेंस पैटर्न भी पढ़े और स्पेशल वर्ब जो है humble एक्सप्रेशन का वो भी पढ़े और इसका यूजेस भी पढ़े। Hope you learned something in this lesson. Today's lesson is this much. Let's meet in next time. Till that time, be safe and be healthy. Thank you. Sayonara. Goodbye.